और इथेनॉलिक था, वरना वो होता अगर हमारे पास एक्वस होता तो हमारे पास इथेनॉल होता, बट इन दिस केस वी हैव इथेन। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया था ना। So 30 alkynes, Yes, sir. hydrocarbons are contain one triple bond, ठीक है, so they contain one triple bond. Like alkenes, alkynes take part in addition reactions. Saturated compounds can be formed. वो कह रहा है कि वो alkynes जो है ना alkenes की तरह है। हाँ, And मेरे को सर। अस्सलाम वालेकुम। तो भैया इट्स द सेम अल्केन्स पेपर, लाइक ठीक है। आप अल्केन्स की तरह करेंगे? ओके हम्म। सर। मतलब अच्छा हाँ, अल्काइंस और alkenes, लाइक alkenes एल्कीन मतलब वही कहना कि it's like आपको alkenes. So propane undergoes addition reaction with the हम्म। excess of HBr, right? In two stages. Markovnikov's rule applies to the addition of HBr at each stage. क्या था? What was Markovnikov's rule? That the halogen attaches to the carbon with the least hydrogens. ठीक है, और the hydrogen attaches to the Yes, carbon with the most hydrogens, ठीक है। Yeah. most hydrogens and there's a positive charge हाँ, at so the end. propine is this thing, ठीक है, और बाकी ये चीज है। तो if ये तो खैर नहीं होगा। So if HBr gets added, right? Mm-hmm. तो what is the main product? H के साथ attach होगा, right side, left side? I think it's on the second carbon, like the answer should be नहीं, D H because Br डबल से। बॉन्ड ब्रेक होगा ना। हाँ, बी आर मतलब ऐसा होगा कि बी आर यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन तो वहां पे जाएगा ना साइड सिंगल वाले। साइड पे, हाँ। and there will be Br on the second carbon, and it happens again till all the bonds are broken. So two उससे Br उससे कहा at था this कि it point. happens again until all bonds are broken. नहीं, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में तो दो हाँ, दफा होना चाहिए Br. पहले तो हाँ ठीक है, पहले तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, HBr ऐड हो जाएगा, और फिर दोबारा होगा, तो हाँ ठीक है, तो आई थिंक इट्स गोना बी डी, राइट। सही है। हम्म। अच्छा, bromine reacts with alkenes by clear enough. Bromine reacts with alkenes by electrophilic addition mechanism in which a cation is formed as an intermediate, ठीक है। तो which mixture will produce the most stable in, अच्छा मुझे बताओ कि वो जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है कौन सा वाला स्टेबल होता है, द वन विद मोर अल्काइल चेन्स और द वन विद। सेकंड कार्बन कंटाइन होता है ना मोर स्टेबल। नहीं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब टर्शी कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा ओ स्टेबल होता है। ओके। सेकेंड या डिग्री कार्बोकैटायन उससे कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज ओके। द लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ओके बताओ सर। इनमें से किस में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा? एल्कीन्स। उसमें डायमिथाइल पेंट 1 3 3 3 18 methyl 3 3. And so what about if there is an electron donating group? So electron withdrawing, right? So it won't be stable like for methyl नहीं, and methyl. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो कोई भी नहीं है, जैसा पेंट वन इन है मेरा ना। मतलब donating. पेंट वन इन, पेंट 5 हो गया, वन इन का मतलब है डबल बॉन्ड हो गया, और 3 3 डाइमिथाइल, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है। अब मुझे बता कि Yes. इफ ब्रोमीन रिएक्ट्स, तो ब्रोमीन किस वाले के साथ बॉन्ड करेगा पहले, मतलब कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? ब्रोमीन राइट साइड पे कार्बोकैटायन किधर बनेगा व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद इट, राइट I वन? think on the right side. So the right one. नहीं, द ब्रोमीन विल react, the double bond will break. लेकिन the more stable carbocation is when the bromine gets added on the right, on the left side, and this is the one that becomes the carbocation. And that would be like But it would carb second carbocation, second degree Second carbocation. secondary carbocation या 2 डिग्री carbocation, ठीक है। तो एथीन पे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। हाँ, तो इस केस में क्या बन रहा है? 2 डिग्री carbocation, so why wouldn't it not attach to the second carbon? क्योंकि then it can possibly attach to the second carbon as well, ठीक है। तो Br could attach over here,
तो दिस इज द कार्बन दैट बिकम्स द कार्बोकैटायन, ठीक है, लेकिन दैट्स अ Yeah. 1 डिग्री, It will be 1 डिग्री, Okay. तो लेकिन वन स्टेबल है ना, Yeah, that's primary, right? that's going to be no, हाँ that's a primary carbocation, so that's unstable, ठीक है, तो that's your minor yeah, product. both of them are not Okay. that much stable as compared to the third degree. हाँ, Okay. तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना, so it's going to be the minor products and unstable carbocation. अच्छा, इथीन के केस में both of them will be, मतलब वो तो फर्क ही नहीं पड़ता इथीन में ना कि whether it attaches to the right Yeah, or both left. of them will be the same. तो ये कार्बोकैटायन बनेगा Okay. and that's going to be a primary carbocation, ठीक है, either Yeah, way, वो जहाँ मर्जी अटैच हो. अच्छा, मिथाइल प्रोपीन में क्या होगा? प्रोपीन इज, 3 carbons. अब बताओ कि ब्रोमीन अटैच किस साथ होगा, राइट वन लेफ्ट वन? The right one, ठीक है, एंड दिस बिकम्स योर कार्बोकैटायन, ठीक है, द डबल बॉन्ड इन द मिडल गोज अवे. it will be secondary. सेकेंडरी नहीं है ये, सॉरी, डबल बॉन्ड 3 डिग्री Tertiary or कार्बोकैट, tertiary ये or टर्श, tertiary. ये वाला टर्शी है, ठीक है, तो Okay. तो दैट वन इज अ टर्शी Uh, कार्बोकैटायन, ठीक है, और टर्शी कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल वन, तो सी है फिर आंसर इसका, ठीक है. Yeah. okay, sir. What about the fourth one, propene? उसमें नहीं, तो उसमें because we have second Celsius, second degree तो बी आर carbocation. अगर इधर अटैच होगा तो Mm-hmm. डबल बॉन्ड, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, and this becomes a carbocation, so that's a 2 degree carbocation, ठीक है, Okay. सही है. अच्छा, अगला रिएक्शन मैकेनिज्म इज आइदर SN1, ये वो हॉट एथेनॉलिक हैलोजेनो एल्केन्स का रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका क्या मैकेनिज्म था, मतलब वो किधर है हमारे AS? अच्छा, nucleophilic substitution, right? You've got a halogenoalkane, it undergoes nucleophilic substitution, so it either gets substituted by OH, ठीक है, NOH aqueous reflux, या अमोनिया एथेनॉलिक, अमोनिया गैस इन सील ट्यूब, तो द हैलोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड, या फिर CN-1 एथेनॉलिक है, तो वो NaCN एथेनॉलिक एंड रिफ्लक्स. उसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म था ना, दैट वाज SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो इफ इट्स अ प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन, तो उसमें क्या होता है कि वो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स डायरेक्टली एंड द सील गेट्स नॉक्ड आउट. तो वो Yeah. जो, So it's only one step reaction, हाँ, right? वन For the वन स्टेप, primary hydrogen. हाँ, ऑब्वियसली कि प्राइमरी कार्बोकैटायन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, so this, it's very hard for the Cl to go away on its own, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन हैज अ लार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो which is why वो OH आता है, then the Cl leaves. But over here in a tertiary carbocation, the positive charge, because of the more electron donating alkyl chains, the positive charge is very less. तो वो जो Cl negative ना, वो easily it can break away, ठीक है, तो Cl breaks away first, forms a very stable carbocation, and then OH-1 comes in, ठीक है, तो इस Okay, वाले sir. में अब बताओ क्या होगा. Mm-hmm. It's either S1 or S2. Okay, also can be the general case where SN2 mechanisms only. ऑप्शन ए ठीक है. All secondary halogen alkenes react by the S. I don't think, because there will be S1 as well. Like some halogen alkenes react by just one step क्योंकि mechanism. हाँ, सेकेंडरी जो है ना वो मिक्स होता है उसका ना, Hmm. प्राइमरी इज SN2, ठीक है, और टर्शी जो है ना दैट्स SN1. Mm-hmm. तो SN जो बीच वाला होता है ना सेकेंडरी, दैट्स लाइक बोथ, ठीक है, Okay. तो दोनों होते हैं. बी सही है. Both the halogen alkane and the cyanide ion are involved in the initial. So I don't think so, because if there's like negative and then the cyanide comes, right? हाँ, SN1 में होता है कि वो पहले स्टेप है साइन, वो जो न्यूक्लियोफाइल है ना, Yes. इट्स नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, Yeah. वो Cl हैलोजन टूट के अलग होता है, देन द न्यूक्लियोफाइल कम्स इन, ठीक है, सो तो नॉट इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है. I think the last one is correct.
एक सेकंड, क्लोरीथेन reacts with E तो SN2 है क्योंकि प्राइमरी हाइड्रोजन अल्केन है, तो D is correct, ठीक है। there is a Yes. very short lived negatively charged transition state, ठीक है, so that is true, ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज भी है। अच्छा, सो आई थिंक देयर अल्कोहल्स, ठीक है। Mhm. अच्छा, he's warming them with mild oxidizing agents. Some of these alcohols, when dehydrated, will give a pair of cis trans isomers with molecular formula C5H10. Which is correct? C5H10. पहले तो बताओ कि ऑक्साइजिंग एजेंट्स का कौन कौन रिएक्ट करेगा, कौन से अल्कोहल्स ऑक्साइज होंगे एक्स वाई जी में से? Secondary and Primary tertiary, and right? तो फर्स्ट टू होंगे ना ऑक्साइज, राइट? Yes, sir. ये कौन सा अल्कोहल है? Sir, I think it's tertiary doesn't. tertiary. Tertiary doesn't work. First, No. primary, and second. तो वो तो एक्स एंड वाई ओनली, राइट? Yes, sir. अच्छा, which of these will get dehydrated to form a pair of cis trans isomers? I think it'd I be think it's Y. Y. Yeah, because it does not have the methyl groups like हाँ, वाई होगा two क्योंकि attached to the carbon. पहले Because वाले if we में ना, take the हाँ if you take the OH out at the end, we'll only have two H's on one carbon. हाँ, so you'll have two H's, so that doesn't make a cis trans, ठीक है। तो X Yes, निकल sir. गया, so you're left with Y and Z. Y will, क्योंकि Y में you got 3 and 2 carbon on that side, हाँ 3 or 2 on that side, तो बीच में डबल बॉन्ड होगा ना, so if you put a double bond over there, तो वो carbon will have both sides different, ठीक है, this carbon has both sides different, ठीक है, तो Y Okay. will, Z को चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर। अच्छा, ये कौन सा टेस्ट है दिस वन? For the what was it, CH3 group, right? Methyl group. If हाँ, it's accepted. iodoform test था, which was for CH3 Uh, methyl with a Yeah. carbonyl OH. Yeah. or methyl with CHOH. I think it's D because methyl pentol. It has a methyl group. वो तो ठीक है, देख लेते हैं। Pentan 2 all right, pent 5, 2 all means OH, और 2 पे ही methyl है, right? Mm-hmm. तो So what was the नहीं, like two main points for this reaction? ये क्या कह रहे हो? इसके लिए दो मेन चीजें थी ना, दो मेन स्टेप्स थे जो हम याद कर रहे थे कि इसकी वजह से ये दो होगा। वो कौन से थे कि अगर हमारे पास आयोडाइड फॉर्म लाइक टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं, और तो कुछ भी नहीं था इसमें, बस ये था कि आइडोफॉर्म टेस्ट में तो कोई बस ज्यादा, इतना ही बताना चाहिए कि हमारे पास लाइक ऑन ये था लाइक ना आई मीन कि हाँ ओके। कि या तो मिथाइल विद कार्बोनिल था, मिथाइल विद CHOH था ना, मिथाइल टूट के अलग हो जाता था, CHI3 येलो प्रेसिपिटेट, और वो जो एंड दूसरी इट हैज साइड, टू बी एट द एंड, मतलब मिडल में हाँ नहीं हो सकता। ओके। हाँ हाँ, बस ये होना चाहिए मिथाइल विद सीरियल बॉन्ड हो या मिथाइल विद CHOH, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिथाइल ओके। है लेकिन CHOH इज मिसिंग, राइट? यस। मतलब इन दोनों में तो से कोई कौन चाहिए। बताना? ओके। What about C, C, B, C, and C, नहीं, अब वो करो, मुझे एक आंसर बताओ कौन सा होगा। uh-huh. So So wouldn't it be A? E क्या होगा? पेंट, NOH। Yeah. And then OH is at the end, and there's a H, and then there's a नहीं, CH but as well. where is this structure? Methyl with CHOH. I think it's B, the second Oh, one, okay, because okay. I get then what you mean. alcohol will be in the second carbon. हाँ ठीक है, वो है Yeah, and कि then there will be a CH3. Yeah. and CHOH, right? So
तो ये Yeah. टूटेगा, CH3 will form a yellow precipitate while बस B है, ठीक है। So the CH3 forms the precipitate, हाँ the मतलब yellow precipitate. यही है ना, the CH3 breaks away, it forms the yellow precipitate which is, Uh, this is known as triiodomethane, ठीक है। okay. Okay, sir. तो triiodomethane। अच्छा, the mechanism for this reaction वो aldehyde वाला है, it's nucleophilic addition, ठीक है। What Also, it is the won't be correct the structure of the B or intermediate ion D, formed? someone. इसके बाद क्या होता है? B What or D. Oh, okay. It becomes a lone pair. It has a lone pair and then it attaches with the hydrogen and the N. नहीं वही होगा ना, बस नीचे से CN अटैच हो गया, राइट? Oh, yeah, it's D. Triple bond N. नीचे CN अटैच हो गया, H है, ऊपर क्या हो जाता है? O-1 हो जाता है ना, Right. Yeah. और फिर वो O-1 अटैचेस टू H, ठीक है। Okay. तो D है। अच्छा, which compound reacts with 2,4-DNPH reagent but does not react with toluenes? 2,4-DNPH के साथ कौन रिएक्ट करता है? They're both Ketones aldehydes and and aldehydes. So we're looking yeah, for a ketone ketone. then, because the ketone Yeah. doesn't react with tolerance, right? It doesn't get Yes, oxidized, sir. ठीक है। Yeah. तो कौन सा है? Uh, let me see. It's I think. Let me see carefully. T3O. So it is B, the second one. हम्म, B. B कीटोन है। C, yeah. I'm not sure, but at the last it has a O with H. वो तो एल्डिहाइड हुआ ना। Oh, okay. C. C or A. Someone was C or A. C double H. That's कीटोन carboxylic acid. I think सिंपल, C. C कीटोन है, सिंपल है। कीटोन कौन सा है? कीटोन Yeah. इज दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि इस कंपाउंड एक्स हैज स्टीरियो आइसोमर्स एंड फॉर्म द प्रेसिपिटेट विद फेलिंग्स। फेलिंग्स के साथ प्रेसिपिटेट कौन फॉर्म करता है? रेड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। Big Aldehydes? yes, sir. तो इनमें से which ones are aldehydes? A and D, like double bond O at the last. अच्छा, फिर वो कह रहा है कि it also forms स्टीरियो आइसोमर्स। तो इनमें से A and D में से which one forms D. स्टीरियो? No, A. D. No, sir. It A doesn't form it because there's methyl groups, right? They're both same. हाँ, तो it can't form cis trans, ठीक है। Yeah, D. Yeah. D कौन सा स्टीरियो आइसोमर्स बना रहा है? It could form my optical No. isomer. ठीक है, सो हाँ, अच्छा, so it is forming Optical an acid. optical The one isolate, that's, yeah, there's a methyl, then there's a alkyl. Yeah, that one. Yeah, ठीक है। yeah. अच्छा, Okay. which reaction will form propanoic acid? Acid called Sir, acidic hydrolysis of ethane nitride. हाँ, नहीं No, yeah, whatever it has नहीं, to be ethane acidic. ethane nitrile जो है, that's this thing, right? You Mhm. hydrolyze a nitrile, so it forms carboxylic acid, ठीक है। yeah. So that's ethanoic acid, not propanoic acid. Oh, okay. So it's A. No, hold on. BC, C I है ना, think acidic इससे hydrolysis of ऊपर propane nitride. C, yeah, C. C है, ठीक है। Sorry about that. अच्छा, alkaline hydrolysis of an ester will not form propanoic acid क्योंकि it will form the salt of the propanoic acid, क्योंकि alkaline है ना Yes, condition, sir. ठीक है। Okay, so with acidic, it forms an acid, and with alkaline, it forms the salt. हाँ, because it won't, I mean, इधर बनना तो propanoic acid ही चाहिए था ना, you should have gotten propanoic acid, right?
Yeah. But it's But alkaline, लेकिन so it should alkaline be. condition है, तो it's going to form the salt क्योंकि it will eventually react with the alkali, right? Oh, yes, yes, yes. Because acid and okay, yeah, okay. ठीक है. अच्छा ये this is in I think it's an ester, ठीक है. Which Okay. compound on heating with an acid catalyst can produce lactide? It has two double bonds on either side of it, and okay, on heating with the acid catalyst. It has 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sir, I had this question a while ago, but I didn't know how to answer it. नहीं So it's a bit confusing. I think draw the structures, and then we can know. देखो acid catalyst will produce this lactide ना, तो इसका रिवर्स कर लो ना कि this is an ester, right? So you break the molecule back again, break the ester link, reverse कर लो. So what do you get? Carboxylic acid and that. Oh, okay. तो ये वाला क्या बनेगा? This is going to be your carboxylic acid and that's going to be your alcohol, right? Okay. This is going to be your alcohol और ये वाला this is going to be your carboxylic acid, ठीक है? तो मैंने एस्टर को वापस रिवर्स कर लिया ना. I've broken the ester, right? So, तो sir, one in this case, what? Okay, that's like we have also an alcohol, but here we have alcohol and carboxylic acid in one group, like either उसको छोड़, OH or O. वो तो ओवरऑल है ना. मैं तो कह रहा हूँ कि Okay. एस्टर को you break the ester, right? Just focus on this ester. बाकी मॉलिक्यूल को छोड़ दो. Okay. तो you break the ester, right? यहाँ पे एस्टर टूटा है. तो एस्टर टूटने के बाद क्या बनता है? वन साइड फॉर्म्स अल्कोहल, एक अल्कोहल बन गया और Yeah, दूसरा and the carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. So I suppose that it's C then. Me too. हाँ There's और Because it's 3 hydroxy. carbons, and then the OH is on the second carbon. हाँ, तो it's 2 hydroxy propanoic acid, ठीक है. So, sir, let's say if it was more than 3 carbons, for which side would we start counting? Do we start from the double bond O, or do we start from like some other side? जैसा ये वाला ना, you always precedence group कौन से होते हैं? Which one has the highest precedence? The carboxylic acid one. हाँ, तो you always start, you give the lower number to the carboxylic acid, ठीक है. Okay. Okay. मतलब carboxylic acid होते हैं, उसके बाद nitriles होते हैं, and then you have alcohols, फिर amines, ठीक है. So carboxylic acid, sorry, यूं होता है carboxylic acid, nitriles, second importance होती है, then you've got aldehyde ketones, ठीक है. फिर alcohols और फिर amino acids, ठीक है. amines, sorry, not amino acids. Okay. अच्छा ये वाला क्या है इसकी? What is the AR? ये कैलकुलेट करो ना. We just multiply 206 multiply 50 plus 208 multiply by 25 and 209 multiply by अच्छा 25 इसको and just by नहीं, 5. इस मुझे तो बगैर कैलकुलेशन बताओ कि क्या होगा. वैसे नहीं बता सकते हो नहीं बता सकते. I think we should calculate. देखिए अगर 50-50 नहीं वो नहीं पता लगेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. yeah. मैं वैसे गैस करूँ Yeah, तो because it, हाँ yeah, it's gram, isn't it? So like relative abundance multiplied by the AR. And then, sir, do we have to divide it by 100? हाँ. In this case the total is 100, right? 50 ये 25 and Yes, 25, sir. right? ये Yeah. टोटल वैसे चेक कर लेना. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स 100, लेकिन sometimes it's not 100 as well, ठीक है. Oh, okay. So are we just like 50 and then 25 and 25, so it's 100. Yeah. हम्म. Sir, it's B. अच्छा कौन सा? B. बी. Yeah. ठीक है. 207.25
0.25. बस ठीक है। So next one, पेपर टू पहले ना, वो तो एक महीने बाद है ना एमसीक्यूज, राइट? Yeah, paper 2 is first, and then there's practicals, and then there's MCQ. So let's stick with पेपर टू for now. ये सेम ईयर, ठीक है, सेम वो बस समर 23 पेपर टू। तो what's the bonding in magnesium? Metallic, Is metallic bonding? ठीक है, metallic. अच्छा, what's the ionic. Ionic. explain the difference in the melting point of magnesium and sodium chloride? क्या difference है वैसे? Sodium chloride is higher. I think because नहीं वैसे ionic bonds are stronger than magnesium, metallic bonds, because they have like their dipoles, right? Like partial positive, नहीं, partial negative. But ionic bonds are एक तो always नहीं, एक more तो than ऑलमोस्ट सेम है powerful. ना, स्ट्रेंथ तो सेम ही है ना ऑलमोस्ट। वापस Yeah, लिखो, ionic bonds in NaCl is stronger than Okay, the metallic bonds in metallic bond, magnesium. magnesium. देखना पड़ेगा कि metallic bonds Mg. in लेकिन अब मसला है, इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन तो मैं ऐड नहीं कर रहा, चेक कर लेते Yeah, हैं that's इसमें। true. It's kind of like the previous question. हाँ, Yeah, and then like असल में वो मार्क्स sometimes लाइंस भी इतनी ज्यादा नहीं है, मार्क्स मतलब यू कांट इवन गो इनटू डिटेल्स, ठीक है? तो okay. बस वही लिखा है, बॉन्डिंग इन NaCl इज स्ट्रॉन्गर देन, हाँ वही बिल्कुल ही छोटा सा, दैट्स इट, ठीक है? Okay. अच्छा, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है? अब सल्फर इज, I think हाँ सल्फर और फॉस्फोरस का बताओ, ये इनऑर्गेनिक, sulfur makes eight, like S8, and P makes 5 or 3, right? So पी it फोर has पी like फोर होता है, more electron. नहीं Okay, पी, yeah, P4. फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल P4 होता है, Okay, सल्फर इज ऐसे, ठीक है? okay. Yeah, अब okay. बताओ कि So उससे क्या, पहले तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ बोथ ऑफ देम? structure and bonding. Bonding structure is they're both वो मेटालिक covalent. मेटालिक है, आयोनिक है, क्या है ये? Covalent. और कोवलेंट में स्ट्रक्चर क्या है? इज जाइंट कोवलेंट और Induced That covalent. Yeah, yeah, this one giant. Yeah, giant. जाइंट नहीं है, सिंपल मॉलिक्यूलर है, Okay. So yeah, sorry, silicon to silicon. ठीक है? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्डिंग। सिंपल मॉलिक्यूलर Yeah. मतलब क्या होता है कि इसको जब आप मेल्ट करोगे तो व्हाट फोर्स आर यू ब्रेकिंग, लाइक इफ यू मेल्ट और बॉयल देम? the van der Waals forces induced This one dipoles. and this dipoles. हाँ, तो बेसिस इसमें इस सिंपल मॉलिक्यूल में यू हैव, रिमेंबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिंपल मॉलिक्यूल्स में होते हैं, This ठीक है? is upon this तो dipole. योर ब्रेकिंग टेम्परी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है? तो यू ब्रेक Okay, sir. या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, Sir, what did you say about simple molecules? they're the only ones that have intermolecular forces. Only simple molecular, like molecules, and no other हाँ, molecules have जैसा intermolecular forces. जैसा Like मेटल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, मेटल्स में there's only one thing which is metallic bonds. Ionic के अंदर there's only one okay, thing which and is I will go happen. हाँ, I okay, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, वैन डर वाल्स, परमानेंट डाइपोल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में होती है ना, दैट इज फाउंड बाय कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है? okay, sir. अच्छा, तो इसमें which one is going to have stronger temporary dipole induced dipoles and why? S8, so for like 8 because it has more like more electrons, I guess. हाँ, तो more Yeah, electrons, therefore the van der Waals will be stronger as well. हाँ ठीक है, तो वही ऐसे more electrons, ठीक है? तो has stronger instantaneous dipole induced dipole। अभी उसने जो चीज वहां पे मांगी थी ना, वो तो इसने आंसर ही नहीं की। क्वेश्चन में वो खुद कह रहा था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, राइट? तो Yeah. स्ट्रक्चर तो उसने नहीं, उसने बताया मॉलिक्यूल्स है,
सिंपल Sir, I मॉलिक्यूल। have a question. हम्म If someone like अगर हम ये question करें question like paper में, so अब marking scheme में examiners भी according to this mark करेंगे या वो देखेंगे structure और उसके अंदर देखेंगे कि structure मांगा था तो बच्चों ने वो नहीं लिखा नहीं, है वो लिखा या हुआ है बस ना। they will just follow नहीं नहीं, वो स्ट्रक्चर लिखा है ना, कि मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ना। हमने just लिखा था molecule सिंपल और मॉलिक्यूलर, ठीक है। हाँ उन्हें simpler नहीं रखा ऑफिसर। हाँ, डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। I think it's a tendency to for any atom to just attract electrons for it like towards itself. बस ठीक है, कुछ अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स या अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो shape अट्रैक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स काफी होगा, मेरे ख्याल से वो काफी होगा। पावर एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, ठीक है, दैट्स फाइन। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, राइट की तरफ ज्यादा क्यों होती है? दो रीजंस बताओ। mm, electronegativity because I think number of electrons increases across a period. Number one of No, them like more electrons will have more tendency to attract नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो अट्रैक्ट The नहीं करते ना। the number the of protons increases, therefore the protons. Yeah. nuclear attraction increases. दैट्स वन, Yes, ठीक है। sir. प्रोटॉन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, राइट। Yeah. Yes, The sir. shielding remains the same. ठीक है, Shielding remains the same. सेम शील्डिंग, What ठीक है। about the distance? डिस्टेंस को क्या होता है? Distance slightly The decrease. distance remains the डिक्रीजेस, स्लाइटली डिक्रीजेस, ठीक है। Yes, sir. because And the that's 2 protons. points. Yeah. अच्छा, अगला वाला, नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स, क्या कौन सी? Hydrogen bond, right? Hydrogen. Hydrogen bonding. अच्छा, फिर उससे वो कह के ड्रॉ भी करो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो अच्छा, रिमेंबर ऑलवेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स यू आर गोइंग टू शो एग्जैक्टली जस्ट वन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। So I didn't get you. What do you mean? Sir, I didn't, yeah. क्या आपने कहा था? कि देयर इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली जस्ट वन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लेकिन we are just showing like 3. तो हम show तो करें. नहीं नहीं, वो सारे शो Or कर like, रहे हैं। ये नेगेटिव है, ठीक है। oh, I get like one molecule, like 2 molecules, in between 2 molecules, there is just one hydrogen bonding. Huh? अच्छा, एक सेकेंड, यस, Oh, आवाज आ रही है? yeah. Yes, sir. अच्छा, मैं वो कह रहा था कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स ना ऑलवेज शो जस्ट वन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। Okay. एंड दैट्स दिस वन। So hydrogen, nitrogen. Yeah. हाँ, मतलब कोई भी, लेकिन जस्ट वन वन पॉजिटिव फ्रॉम द अदर साइड एंड वन नेगेटिव फ्रॉम दिस साइड, राइट। तो Okay, sir. एक से ज्यादा नहीं शो करने, क्योंकि वो बाकी जो चीजें ना, दे आर Yeah. ऑल पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। Mm-hmm. It'll be a massive amount of showing. Yeah. अच्छा, नेक्स्ट वन, आइस एंड अमोनिया, ठीक है। सजेस्ट टू रीजंस फॉर द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड अमोनिया। Ammonia is a gas, right? And ice is a solid, so नहीं they नहीं, have वो different. दोनों दोनों वो स्टेट तो चलो, वो हर आइस भी हर स्टेट में होती है। वही कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इनके डिफरेंस, मतलब अमोनिया सॉलिड की बात कर रहे हैं ना। तो बताओ कि वाटर एक वाटर है, राइट। And 2 hydrogen. अच्छा, एक वाटर है, ठीक है। और दूसरा जो है ना, वो ये है, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, एक वाटर है और दूसरा जो है वो, अब मुझे तो इन दोनों को देखो जरा गौर से, मुझे था कि Right? Is it because the Molecule. electronegativity of oxygen is greater than nitrogen? तो ठीक है, दैट्स वन, ठीक है। And स्ट्रॉन्गर because it has स्ट्रॉन्गर, Because more molecule. तो ओ इज, so ओ sir, इज, it's north, isn't it? So does that mean that F is least? No, the greatest electronegativity. हाँ, एक तो ये हो गया ना कि F, ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर डायपोल इन वाटर, राइट। yeah. And दूसरा फैक्टर क्या होगा? टू रीजंस। I think because like
It has two hydrogens as compared to three, and has more like lone pairs. So overall, there will be more attraction. नहीं, मुझे तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन ज्यादा बना सकता है? इज इट गोइंग टू बी अमोनिया और इज इट गोइंग टू बी वाटर? If we are also talking about the lone pairs, right? Or हाँ, just with hydrogen? मैं अमोनिया का आइडिया देता हूँ। अमोनिया कैन ओनली फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? It can form two. So क्योंकि क्योंकि oxygen can क्यों yeah, क्यों इट ओनली हैज वन लोन पेयर, राइट? Yeah, oxygen can and form two. ice can form two. हाँ, तो उसके जो एक्स्ट्रा एचेस है ना, वो जाया हो जाते हैं, बिकॉज दे कांट, दे वोंट बी एबल टू फाइंड लोन पेयर्स, ठीक है? तो मतलब इसका एक लोन पेयर है, तो वो एक एच के साथ अट्रैक्ट होगा, द अदर टू विल गेट वेस्टेड, राइट? वाटर हैज टू लोन पेयर्स एंड टू हाइड्रोजन पॉजिटिव, सो इट कैन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है? Okay, sir. तो ये भी देख लो, उसके साथ लिखा हुआ है कि कौन सा वाला था, ये वाला। एक तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N, ठीक है? एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना, इट कैन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल। अमोनिया कैन ओनली फॉर्म जस्ट वन, One. ठीक है? Okay. तो वो वन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, और क्या है कि सेकेंड वन, क्लोरीन इज रिएक्टिव एलिमेंट, इट फॉर्म्स मेनी कंपाउंड्स। क्या किया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर? I think N is plus one, and then plus two, and Plus then three. for aluminum we have plus three, and silicon is going to group like four, so it's like plus four and minus four. कौन सा? मैं पूछ रही थी सर, सिलिकॉन में तो वो ग्रुप फोर में होता है ना, तो हम उसे प्लस फोर लिखेंगे या माइनस फोर, लाइक और बोथ ऑफ देम? वो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, प्लस फोर हो गया, ये प्लस ओके, फाइव होगी, प्लस थ्री होगी, प्लस टू, प्लस वन, ठीक है? प्लस टू एंड प्लस वन। सर लेकिन सिलिकॉन और फास्फोरस का माइनस नहीं होना चाहिए। मैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट द चार्ज, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज के फॉस्फोरस अगर Cl के साथ बॉन्डेड है ना, तो फॉस्फोरस ग्रुप फाइव में इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? या तो हाउ मेनी बॉन्ड शुड इट मेक, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 5 इट कैन शेयर ऑल फाइव, राइट? फाइव या शेयर करेगा तो उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 5 नहीं, मतलब फाइव वो Cl के साथ शेयर करेगा तो दैट्स 10 गोइंग टू बी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, राइट? या पीरियड थ्री के अंदर ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 18 होते हैं इन शेल, राइट? यस So, सर। या so there's nothing wrong. Period three elements can form many bonds, right? Chlorine can form like seven bonds. Chlorine के या अगर chlorine seven bonds possibly form कर लेता है ना, it can share all of its seven electrons. तो उसके outer shell में कितने हो जाएंगे? 14। अभी भी उसका outer shell complete नहीं हुआ, क्योंकि तो period three elements have much bigger outer shells and they can make a lot more bonds, ठीक है? अच्छा, तो the molecule has no charge। वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, वो होते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये सिर्फ फिगर आउट करता है कि because this molecule is a covalent molecule, it doesn't really have a charge। मुझे तो इन दोनों में से P और Cl में से which one is more electronegative? Cl। Cl है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स किसके ज्यादा करीब होंगे? Cl के। Cl के। तो दैट मीन्स के P जो होगा उसका क्या, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दोगे? +5। Positive, partially positive, and then Cl will be partially negative. हाँ, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में ना यू डोंट केयर के उसने इलेक्ट्रॉन, That's right, okay. उसमें होता है कि बस उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है? यू ट्रीट इट एज इफ इट्स आयोनिक, ठीक है? इवन दो इट्स नॉट Okay. आयोनिक। तो पी एस, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने पता करना होता है who's gaining electrons, who's losing electrons। You don't really care कि क्या उसने थोड़ा सा गेन किया या पूरा गेन किया। we just don't care। So you treat a covalent molecule as if it's ionic, ठीक है? तो फॉस्फोरस जो होता है वो क्या होता है? +5 होता है, ठीक है? फॉस्फोरस इज +5। फॉस्फोरस कुड बी -3 एज वेल, मतलब लेट्स से वो 3 Cl के साथ बॉन्डेड है, नहीं 3 H के साथ बॉन्डेड है, फिर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? I think P। तो द इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्लोजर टू
P. P, ठीक है, they'll be closer to P. और phosphorus will have a -3 charge. तो वो maximum कह रहा था oxidation state, तो maximum जो है that's going to be that's obviously going to be ये दूसरे वाला कि +5, मतलब जितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है दैट्स द मैक्सिमम, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, और ये कि अच्छा, the other thing is कि water write an equation for the reaction between excess cold water and the chloride of silicon. What about step what determines the maximum oxidation number of elements in period 3? वही Is तो it known? maximum number of bonds that it can form, ठीक है। Oh, okay. ये Okay. लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? the number of valence electrons लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब वही डिसाइड करता है how many bonds it's going to make, ठीक है। मेरे ख्याल से उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इट कैन मेक, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन शेयर, तो दैट काइंड ऑफ ट्रांसलेट्स इनटू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलो ठीक है, ये कोशिश करो, ये कोशिश करो, ये पेपर कंप्लीट करके मुझे भेज दो, ताकि कल क्लास हो ना तो उसमें इसकी प्रॉब्लम्स कर लें, ठीक है। Okay, sir. Inshallah. चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Okay, sir. Allah ओके, Hafiz. अल्लाह हाफिज़।